Yes, what I need to talk about, what I am planning to talk about today is about the relationships with our children. And I think what we talk about relationships is obviously the way we communicate, the way we are exchanging our thoughts, and yeah, when children are born, definitely we want them to listen to us, and definitely I think everybody is enjoying the initial years where children are born and they really love to listen to the parents, because I think in the last video I did told everybody that children, for them, they are you are the world to them. बच्चों की पूरी दुनिया मम्मी पापा होते हैं, and they are initially trying to entertain you all. So there was this friend of mine who was just telling me that Nidhi, it's fine, my children actually listen to me, and I said just wait for them to grow up and then you'll understand. And I think जितनों के भी बच्चे बड़े हो चुके हैं, you all are thinking कि हाँ बच्चे पहले सुनते थे पर अब नहीं सुनते हैं. So suddenly our world is shattered and we are really upset कि क्यों हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हैं. And yes, I'm so thankful for you all to join in. Do keep on messaging whatever you want to ask. Maybe if I have time or we are in sync with each other's thoughts, I might reply and try to make the communication a little more interactive. So do ask a few questions if you want to, and I would love you all to share your thoughts here as well, because it's lovely when I am off the video and when I see your messages, it's very inspiring. And believe me, हम कितने भी successful हो जाए, without you viewers we are nothing. So you are motivating us more rather than me motivating you more. So thank you so much for your likes, and definitely I'll try to make it worthwhile here. So yes, basically जब भी हम अपने बच्चों से बात करते हैं, I think we are trying to copy our own parents. हमारे जनरेशन से टिपिकल कुछ डायलॉग्स है जो शायद कभी छूटते नहीं हैं. हम कितने भी पेरेंटिंग के सेशंस हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, डेफिनेटली मुंह से कुछ न कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं which is quite the same dialogues what our parents have told us. जैसे तुम इतने बड़े नहीं हुए हो जो तुम इतनी मुझे उल्टा जवाब दे रहे हो, या मैं परेशान हो गई हूँ तुम सबसे, या टिपिकल डायलॉग कि बस दिन भर झगड़ते ही रहते हो तुम दोनों, एंड थिंग्स लाइक दैट. So what I call this is basically traditional parenting. We are all used to traditional parenting. हाँ, पेरेंटिंग के बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं. अगर आपने मेरे साथ पहले वर्कशॉप्स अटेंड किए होंगे, देर आर मैनी पीपल who keep on joining me every time. So a lot of parenting, नए नोशंस बनाए जा रहे हैं. हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है, होवरिंग पेरेंटिंग है, देन स्लो पेरेंटिंग है, निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग है. सो बहुत अलग अलग टाइप्स के होने वाले हैं. बट देन व्हाट टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट इज मोर ऑफ ट्रेडिशनल पेरेंटिंग. एंड ट्रेडिशनल पेरेंटिंग में बेसिकली ये आता है कि हम टिपिकली वही डायलॉग्स यूज़ कर रहे हैं जो बड़ों ने हमें बोले हैं. सो देयर वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि we are behaving exactly what our parents did. And I think अगर हम वो याद करें, वो पल जो हमें हर्ट हुए हैं, या वो समय जब मम्मी ने या पापा ने इतना डांटा कि आप एक कॉर्नर में बहुत ज़्यादा जाकर के रोए थे. एंड आई एम श्योर देयर आर मेनी सच इंसिडेंसेस जो हम अपने पेरेंट्स के भूल नहीं पाते हैं. बट इवन आफ्टर वी फेसिंग ऑल दीज इश्यूज, लेकिन हम अपने ये डायलॉग्स जल्दी से चेंज नहीं करते हैं.
So that we need to understand. So yeah, coming back to the traditional parenting that I was talking about, I think we need to overcome this, and it is really important for us to understand that it's time for us to change. Because पहले जो जिस माहौल में हम बड़े होते थे, so there were a lot of neighbors around, there were lot of cousins around. जैसे अगर यहाँ पे मम्मी ने डांट दिया तो immediately we had our own places where we could talk about our feelings. पर आज ऐसा नहीं है. There is a whole lot of things that has changed. So whatever dialogues that you use, they keep on hovering in your child's mind, even if they don't know. But yes, subconscious mind में वही चलते रहता है कि मम्मा ने ऐसा बोला. So we need to understand. So I will first talk about the stages कि बच्चा मेरा सुनता है से बच्चा मेरा बिल्कुल नहीं सुनता. So how does this stage go? I'll talk about that. So when the child is born, initially the first stage which I say is that वो हर चीज़ सुनते हैं. जैसे अगर यहाँ पे अगर किसी के बहुत छोटे बच्चे हैं who are just very newly born या 1 year या 2 years के, so आप जो भी बोलोगे बच्चा सुन लेगा. So like I just shared a few minutes back that बच्चे इनिशियली हर कोई ये बोलता है कि मम्मा जो बोलेगी वही करेंगे. इनफैक्ट अगर बाहर वाला कुछ आकर के बोलता है कि बेटा ऐसा नहीं होता है, तो द चाइल्ड विल कम टू यू, मम्मी या पापा के पास, और वो कंफर्म करेगा कि मम्मा ऐसा नहीं है ना. माई डॉटर ऑल्सो कम्स टू मी एवरी टाइम दैट मम्मा आज खाना यही बना है ना. बिकॉज अगर उनको दिखाया जाता है कि ये खाना बना है, देन दे से मस्ती में होता है जॉइंट फैमिलीज में, या यू नो वेयर समबडी सेज कि नहीं नहीं ये तो है ही नहीं, एंड द चाइल्ड विल से अरे मुझे तो यही दिख रहा है. देन द चाइल्ड विल कम एंड कन्फर्म विथ यू कि क्या यही है. सो बिकॉज द चाइल्ड ट्रस्ट्स यू completely. Yes, they are born to know that they have complete trust in you. So first stage है that they listen to you. Then the second stage comes when they get upset. आप अगर कुछ बोलते हो तो उनको गुस्सा आता है. जैसे आप अगर बोलते हो ब्रश करो तो उनको गुस्सा आ जाएगा. खाना खाओ गुस्सा आएगा. मैगी नहीं खाना चाहिए गुस्सा आएगा. बट इवन इफ दे आर अपसेट, गुस्सा होंगे, चिड़चिड़ करेंगे, लेकिन दे विल लिसन टू यू. So the second stage is where they will still listen to you, but they will be upset. They will be showing that they are upset with you. And then the third stage will come when they stop listening to you. जब आप बोलते हो कि मैंने 4 बार बोला, 5 बार बोला, लेकिन वो बच्चा सुन ही नहीं रहा है. So that stage is another difficult one, where you actually get that setback कि boss, ये बच्चा जो मेरा सुनता था suddenly नहीं सुन रहा है. And that comes at the age of 7, 8, 9, 10, मे बी 11, 12. अगर बच्चा इमोशनली अभी भी आपके तरफ इंक्लाइंड है, मे बी लेटर आएगा स्टेज, पर वो स्टेज डेफिनेटली आएगा जब वो बच्चा आपकी सुनने की मूड में नहीं रहेगा बिल्कुल भी. एंड देन वो स्टेज कैन ऑल्सो कन्वर्ट इन टू वेयर दे ऑलवेज यू नो फाइंड रीजन्स कि आप क्यों नहीं ऐसा बोल रहे हो, या मैं क्यों सुनूं आपकी बात. टेल मी वन रीजन वाई शुड आई लिसन टू यू. So they will, counter question you, or they might even rebel. They might say that मम्मी ने बोला है ना तो वो मुझे बिल्कुल नहीं करना है. So that's where the relationship goes haywire, and it's really difficult for us to understand कि what went wrong. So we really need to ponder कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं. So first we want to listen to that कि हमारे बच्चे क्यों नहीं सुन रहे हैं. So my thing is, when the child is born, he will always see कि मैं क्या किया और उसका क्या रिजल्ट मिला मुझे. मैंने क्या बिहेव किया और मुझे उसका क्या रिजल्ट मिला. अगर रिजल्ट मुझे ठीक नहीं लग रहा है तो मैं डेफिनेटली ये नहीं करूँगा नेक्स्ट टाइम. So probably, like if you want to empathize more on it, I think we can think about when you got married. आपकी जब शादी हुई, you try to understand your in-laws.
And that's my favorite comparison that I always do with in-laws. तो आप जब in-laws के यहाँ पे जाते हो, maybe the husband goes to the in-laws place or the wife goes to the in-laws place. So you try to first be very good with everybody, and then after your experiences go wrong, then you change your attitudes towards them. Am I right? Give me a thumbs up. Am I right? Our views change according to our experiences with our relations, with our relationships, with our in-laws. So, isn't that true? Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you for sharing. Yeah. So, yes, our relationships keep on changing according to what our experiences are. So, if you are really, really happy with probably my nanand or my sister-in-law, so definitely I'll do a lot of things for her. But then if I don't have a good relationship with her, then I would like, hello, please let it be. So, मन से वो नहीं आता है. So, it's very natural to even our children that अगर मम्मी क्या और मेरा relationship अच्छा है तो ही मैं आगे बढ़ूँगा. So I would like some information from your side. I want you all to type a little that you share your experiences in the space here कि आपको ऐसा कब क्या relationship का याद आ रहा है कि you are not happy with that person. Let me know your experiences. आपके साथ ऐसा क्या situation हुआ कभी लाइफ में जहां आपको लगा कि ये relationship मुझे नहीं अच्छी लग रही है. ऐसा क्या हुआ? Maybe a friend of yours leaked out your best secrets. तो obviously आप अपना secret share नहीं करोगे. तो ऐसा आपके साथ क्या हुआ है जो शायद आपको अच्छा नहीं लगा और उसके कारण आपने उसके से बात करना या उस तरह के रिलेशनशिप रखना, शेयर करना बंद कर दिया. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टाइप हियर सो दैट आई नो वेदर यू आर अंडरस्टैंडिंग मी एंड कीप शेयरिंग योर लाइक्स एंड योर व्यूज. Your experiences where you thought that yes, it can be with everybody. Can this be with between mother-daughter relationship? It can be with everybody. It can be with a mother-daughter. It can be with the husband-wife. It can be with best friends. It can be with your boss. It can be with your colleague. Anybody. आपका कुछ एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करिए जो आपको नहीं अच्छा लगा और उसके कारण आपका व्यू चेंज हो गया. प्लीज शेयर इट इन द स्पेस हियर. Right. So I want you all to share more of your thoughts. That where did you think that the relationship went wrong? You need not name the relationship, but ऐसा किसी और ने क्या किया कि आपको हर्ट हुआ? Thank you so much. Yes, you had your relationships where okay, there are some messages. Yes, okay, where you thought probably the person did not value you or the person did not listen to you. Right. So at the same time, I have been experiencing the kind of reaction of my mother due to which it has impacted me, and by default I have also adapted the same way of reactions to the feelings. Absolutely, ma'am. Thank you so much for sharing these thoughts. I really love you for this because it really takes guts for us to accept that what has happened to me and because of that it has impacted me, and it goes with everybody, Hina.
It goes with everybody. What even my mother has done with me impacts me in my life. What my in fact this goes for everybody, even the men. It goes even for the women. हमारे साथ क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो हमारे कहीं यहाँ पे असर दिखते हैं. अगर मेरे भरोसे का कोई अपना मुझे चीट करता है तभी मेरी बाकी सभी के प्रति देखने का नज़रिया बदल गया. आई अग्री टू दैट कि यू आर सो हर्ट फ्रॉम इनसाइड दैट जो हम बोलते हैं दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है. सो डेफिनेटली आई अग्री. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स यार. Yes, so we have these kind of experiences where it impacts us very badly, and we cannot understand that why we went wrong, and that is why I'm having this workshop on anger management for the elder kids and adults, where I'm actually planning in the workshop to for that you can come out of those incidences in your childhood and get free of those negative thoughts that we are carrying forward in our lives, जो I think हम subconsciously भी बहुत impact हो जाता है. Yes, thank you. Same here. Even my pattern of scolding is the same as my mother, which I never liked, but I do the same with my kid. Thank you so much. Thank you for sharing. Yes, trust and empathy is something that is really important. Thanks Sabia for sharing that. What is extremely essential is that I think we cannot change anybody, be it any kind of relationship. We cannot change anybody here. So what we need to do is that change ourselves, change the way we react. Rather than reacting, we need to respond more. So I think that's where we really need to work on ourselves. So yes, so we know that how things are impacting us and how we are doing negative for our children. So now what is to be done and why was it done? So I would like to share a few incidences and examples which you can anytime type here, and I would love to share with everybody कि आपके साथ कैसा हुआ है, because जैसा आपके साथ हुआ है I'm sure everybody in some or the other context facing the same issue. We are doing nothing new, it's just that we are not talking about it. We are all in the same soup, you and even I. Yes, even if I'm a child psychologist, that doesn't mean that I am a perfect person. Even I have my ups and downs. So we cannot think of being a perfect parent, but yes, we can at least remove the negativity in our life. If we just remove the negativity from our life, I think things can be much better. So I want to share a few incidences where the way we react, what the child thinks, because child psychology is absolutely about that. What I speak to my child and what does he understand. और जहाँ अंडरस्टैंडिंग की गड़बड़ होती है वहाँ फ्रैंकनेस नहीं आती है, और उसके कारण बच्चा आपका सुनता नहीं है. आप उसकी तभी नहीं सुनते हो जब आपको पता है कि आपका रिलेशनशिप खराब है. Like whenever I listen to friends, जब वो क्रिप करते हैं, यार क्या फ़ायदा है उसके बारे में बात करके, वो सुनता कहाँ है. So that's what we are doing, right? That's what your child is doing. Child भी बच्चा कहीं ना कहीं यही सोचता है कि क्या फ़ायदा है मेरा मन का बात करने का, because I don't get the right reaction. So if he is feeling that I am not accepted by my mom, why will he speak about his feelings? So हम ऐसे कौन सी जगह पे बच्चे के फीलिंग्स को कर्ब कर देते हैं, that I would like to share to you. So there's this one thing, one example where I call it as denial of feelings. We deny to their feelings in very abrupt way, and
be very cautious about what I'm saying. It's not about only children, it is also about any relationship. If you think that your wife is not listening to you, if you think your husband is not listening to you, if you think that your in-laws are not listening to you, your mom is not listening to you, your brother is not listening to you, everything has only one base, where there is a loss of communication. There is no acceptance of what we are doing. There is no feeling of acceptance. Like, if I want to talk to somebody, I will talk to the person only if I feel that I'm going to be accepted by the person. अगर वो सामने वाला मुझे जज करने वाला है, तो मैं उसके बारे में अपने बारे में वहाँ नहीं डिस्क्लोज करूँगी. आई विल कीप माई सेल्फ, यार यहाँ बात करके फ़ायदा नहीं है, मुझे यहाँ बात नहीं करना है. सो द सेम रिएक्शन इज विथ योर चाइल्ड, वेयर यू sometimes subconsciously, unconsciously deny to the child's feelings. I have written a very simple example. I would like you all to talk about it. Are you all ready? Just wave if you're all ready to share. Thank you. Yes. So hit the like button and do type in so that I know what is happening at your end. So there's this example, a very simple, कि I hate studies. How many of your children say that? I hate studies. Dipali has written something. Today's generation बच्चों के साथ बच्चा बन जाओ और use और never, नहीं ऐसे words मत करो तो बच्चे हमारे सुनेंगे ही. हाउ स्वीट दीपाली, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दोज थॉट्स एंड यू गॉट इट बिंगो राइट देयर. सो यस, सो हाउ मेनी ऑफ योर चिल्ड्रन से दैट आई डोंट लाइक स्टडीज? 2. एनीबडी एल्स जिनके बच्चे बोलते हैं 3 दैट they say that they don't like studies? They are very verbal about it and they would say that, boss, I hate this. Right. Hi everybody who's joining. I'm so happy and glad that you're here. रूपा इज़ वेरी एक्टिव हियर. थैंक यू रूपा. मैम, घर में अगर कोई मेरे रिलेशन में कोई मेरे साथ चीट करता है तो आगे वाले के साथ मेरी रिएक्शन अच्छी नहीं होती, पर बच्चों के खातिर मैं चुप रहती कि बच्चा आगे वाले के लिए. Okay, I'll get back to this question because since it's a long one. Right, so when your child shares with you that I don't like studies, my child doesn't like to read, right? Thank you Poonam for sharing that. So when your child doesn't like to study, okay Rizwana, I'm happy that you're not your children, definitely. Right, so whatever the child is saying that मेरा interest है लेकिन मुझे learn नहीं होता है. Right, so what happens when the child is, sharing his feelings ki boss, I don't like studies? The first thing what we do is we deny to their feelings. Mostly we do that. Like ये गलत थॉट है, स्टडीज तो बेटा करनी ही पड़ेगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है. या वी टेंड टू आंसर कि बॉस ये लिखना तो ज़रूरी है, अच्छा थोड़ा सा लिख ले फिर बाद में हम करेंगे. We'll give solutions. We give solutions that definitely, Rizwana, if you write that I don't like studies, then definitely the role model is like that. So you're lucky if they don't follow you and they are actually having their own mind that even if mommy doesn't like studies, I am liking them. You are very lucky, thankfully. Yes, Mamta, you've written that they suffer from writing problems. And Ankita is writing, my child is not ready to read syllabus or any stories. Right, so what are we doing with them? That is the point, is that
they will try to run away from you when you are judging them and when you're telling them that ये सही नहीं है बेटा, करना तो पड़ेगा, and you know we are trying to convince them every time. So rather than that, today try this technique. If you have pen and paper, do write it down, that I accept. हाँ, मैं समझती हूँ तुम्हें कि तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं है, तुम्हें ये चीज़ करना पसंद नहीं है, मुझे पता है तुम्हें ये लर्न करने की इच्छा नहीं हो रही है. I understand what you're feeling. The time you say that I understand, the child knows that he is accepted. And that's what we all want. We all want that. That's the basic human tendency. We want the husband to accept us the way we are. We want our in-laws to accept us the way we want. We want our children to accept us the way we are. And I think that's what the human tendency is. Yeah. So that's what even the child wants. The child wants his feelings to be accepted. So what you rather than denying your feelings, what you can say is, हाँ बच्चा, मैं समझती हूँ कि तुम्हें ये नहीं पसंद आ रहा है. And then अगर बड़ा बच्चा है, डेफिनेटली अगर डिनाइल है तो वो सेकेंड स्टेज पे है जहाँ बच्चा बड़ा हो चुका है. तो इस समय आपको बोलना है कि फाइन, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट लाइकिंग योर स्टडीज. You let me know what can I do to help you. So you build up a partnership with your child, and then you ask him some ideas how it can be worked out. Because the child knows कि स्कूल तो जाना ही है. He knows कि एग्जाम्स तो देनी ही है. He knows everything what you are trying to explain. तो हम वो ही और बोल करके उसको और अपसेट क्यों कर रहे हैं? So let's not do that. The other example, thank you for your likes. The other example that I want to say is that we criticize our children. Yes, we say, for example, I had this experience at my clinic. There was this child who always had a complaint at home, at school, even in the tuitions, कि ये बहुत झगड़ा करता है, ये बिल्कुल एक जगह स्थिर नहीं बैठता है, बहुत बदमाशी करता है. So everybody had that thought कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, बदमाश है, दिन भर मस्ती करते रहता है, एंड वो पूरा नेगेटिव एटीट्यूड ऑलरेडी बन चुका होता है. नाउ एट दिस टाइम दिस मदर केम टू मी, मैम आज फिर से कंप्लेन आई है. आई वॉज लाइक क्या हुआ? सो मैम उसने ना ट्यूशन में दूसरे बच्चों को बोला कि मैं तो इतना स्मार्ट हूँ कि मैं 10th स्टैंडर्ड की भी बुक रीड करके दे सकता. दैट चाइल्ड वॉज इन 7th स्टैंडर्ड. कि मैम मैं 10th स्टैंडर्ड की बुक भी रीड करके दे सकता हूँ. मैम मैं क्या करूँ, मैं परेशान हो गई हूँ, ये ऐसा ही है, सुनता ही नहीं है, मुझे इतना बुरा लगता है, हर कोई बोलता है. तो आई वॉज लाइक ठीक है, लेट्स आस्क द चाइल्ड. सो वो बच्चा वहाँ पर आया क्लिनिक पर, एंड आई आस्क्ड हिम द होल सीक्वेंस कि बेटा क्या हुआ था. एंड देन ही गेव द होल सीक्वेंस कि मैम मैं वहाँ बैठा था, दूसरे बच्चे मुझे परेशान कर रहे थे, मैंने जब कुछ बोला नहीं तो उसने मुझे छेड़ा ये बोलकर कि तुझे तो कुछ भी पढ़ना नहीं आता है. तो जब उसने ये बोला कि तुझे कुछ पढ़ना नहीं आता है, तब मैंने उसको बोला कि मुझे तू बहुत लो मत समझ, मैं 10th स्टैंडर्ड की बुक भी रीड कर सकता हूँ. द मॉम वॉज इन टीयर्स. शी सेड मैम मैंने सुना ही नहीं मेरे बच्चे को कि उसका क्या प्रॉब्लम आया है. उसने सिर्फ उसको क्रिटिसाइज किया कि मेरा बच्चा ऐसा ही है और मैं उससे परेशान हूँ. एंड लो, दैट वॉज अ डिस्कवरी फॉर दैट पेरेंट, दैट एक्चुअली आई एम नॉट लिसनिंग टू माई चाइल्ड. तो देन शी सेड कि मैम उसने मुझे बोला ही नहीं है. पर उसने क्यों नहीं बोला? क्योंकि मम्मी भी तो नहीं सुनती. So they also have their own views. अगर आपका बच्चा नहीं सुन रहा है, there is a gap. And जब हम नहीं सुनते हैं, बच्चा क्यों सुनेगा? So let's learn from this.
राइट, फॉर एग्जाम्पल यू हैव दिस क्वेश्चन दैट मेरी बेटी होमवर्क नहीं करती है, जैसे ही बोलूँ वो भाग करके चली जाती है. सो रादर देन दैट यू नो, अगेन I always talk about building in partnership. सबसे पहले we cannot always tell the child कि जब मेरी इच्छा है तभी मैं पढ़ाऊँगी. Second thing is कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पढ़ाई कराने के लिए हम उसके साथ बैठ रहे हैं. There has to be some quality time with your child. आपको अपने बच्चे के साथ मस्ती का टाइम निकालना ही पड़ेगा. However busy you are, you have to talk to your child and play with your child. Once you start playing with your child, you build a partnership and then आप अपने बच्चे को बोल सकते हो कि बच्चा आज तो हमको इतनी पढ़ाई करनी है, maybe 2 pages, go slow. मैं और आप वही बनाते हैं किचन में जो हमें पसंद आता है क्वारंटाइन में. सो बच्चा भी वही करना चाह रहा है जो उसको पसंद आ रहा है, और पसंद तभी आएगा जब आप अप्रिशिएट करोगे. आप जितना क्रिटिसाइज करोगे उतना वो भाग जाएगा. इट्स वेरी सिंपल. आप वो चीज़ के लिए क्यों नहीं करोगे? यू जस्ट नीड टू लर्न टू एम्पथाइज. जस्ट ट्राई टू गेट इन टू योर चाइल्ड्स शूज एंड अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रहा है. राइट, कभी कभी बच्चे झूठ बोलते हैं पूछने पर, ऑब्वियसली, क्योंकि सच बोल करके फायदा नहीं होता है. सच बोलने के बाद डांट पड़ रही है, परेशानी हो रही है, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है. मिस्टर संदीप, यू आस्क्ड अबाउट information about slow learner. We are going to have another program where we are going to talk about special children, even the slow learners, even the dyslexic children. So be in touch with us directly. You can message me and I'll add you in the group where we are giving all the updates of what's the next program about. So yes, so बच्चे झूठ तभी बोलते हैं जब उन्हें पता है कि जब वो सच बोलते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता है. So I always say that even in if a worse situation, your child is coming with a beer in her hand or a son is coming with a beer in his hand, तब भी आपको शांति से लेना है और उसको बोलना है ठीक है, we'll talk about it later. So that's the patience I think we need to develop with our children. हम प्रॉब्लम होता है कि हम ही खुद बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, एंड डेफिनेटली अपना पेशेंस डेवलप करने के लिए वी नीड टू meditate a lot. I always recommend to do meditation. Those people who cannot do meditation, definitely they might be having a lot of पर्सनल इश्यूज, बहुत टेंशन होता है, ओवरलोडेड होते हैं, उनके साथ ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है दैट दे कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन मेडिटेशन. सो आई विल अगेन सजेस्ट, वी आर डूइंग एन एंगर मैनेजमेंट प्रोग्राम from 25th we are starting. So if you want to register, you can register, because unless and until you let go your negative emotions, you cannot go ahead with a positive emotion. हम कितना भी workshops कर ले, कितना भी सुन ले, बट जब तक हम अपने पास्ट को इरेज नहीं करते, हम वो बैगेजेस के साथ आगे बढ़ नहीं सकते हैं. सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. मैं जब भी लालच देती हूँ तो वो सुनता है नहीं तो खुद का ही करता है. तो लालच तो मैम मैं भी दे सकती हूँ आपके बच्चे को, तो वो मेरे लिए भी कर देगा. दैट्स द वेरी सिंपल थिंग. लालच आपका कोई बाहर का इंसान भी अगर आकर के बोल दे कि बेटा तू इतना पढ़ाई कर ले, मैं तेरे लिए एक साइकिल दिला दूंगा, तो वो उसके लिए भी कर लेगा. सो व्हाट डिफरेंट आर वी डूइंग? द चाइल्ड इज ट्राइंग टू डू दैट वर्क फॉर गेटिंग अस समथिंग. We are not developing within the child that this is my responsibility and I want to do it. And the children can learn. Trust me, we all can learn about it. But the problem is that हमें short रिजल्ट, शॉर्ट स्पैन में सिंपल तरीके से रिजल्ट चाहिए, और तब हम उनको ब्राइब करना शुरू करते हैं. सो सर, जस्ट अंकिता, जस्ट स्टॉप ब्राइबिंग, बिकॉज दिस इज द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू विथ योर चाइल्ड. सो ट्राई नॉट टू डू इट. सो that's the question. I think I've answered it. So the other thing is I want to share is that जब बच्चा कोई भी चीज़ करता है तो हम उसको instead of reasons, we should not give reasons
टू डिफरेंट थिंग्स. हर बार हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. You will understand these things, as and when you come to situations. But when these situations come, you might be able to understand. For example, now that one of my relative is here, I'm very happy to see her. Swarnima. I remember when I had been to my native place, and my elder one, Tanishka, she was really crying to say that I want to go to Mickey Gigi. I really want to talk to her. And she was in a very sad state where she was very desperate to meet her, but because of some I think she wasn't there in the town or something, so we couldn't go to her. So what I did was I told her, काश एक मैजिक वैंड होता बेटा, एंड मैं तुम्हें वहाँ ले जाती और हम मिल लेते और हमको मज़ा आ जाता. So it wouldn't have been so wonderful. So she cried and cried and cried, but then later on she accepted the fact कि fine, ये चीज़ नहीं हो सकती. This you can take it as a tip in quarantine as well. Like at this age when many children they are upset कि मैं मेरे friends को मिल नहीं सक रहा हूँ, मैं बाहर घूमने नहीं जा रहा हूँ, and then you are obviously telling the child कि बाहर हम नहीं जा सकते बेटा because of these वायरस इश्यूज. ऑब्वियसली वी कैन नॉट गो. सो उस समय आपको क्या करना है छोटे बच्चों के लिए? ऑब्वियसली यू कैन नॉट टेल अ 14-year-old चाइल्ड कि मैं मैजिक कर सकता हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज टेल दैट पेरेंटिंग हैज़ टू चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस. यू कैन नॉट पेरेंट अ चाइल्ड ऑफ 3 years old the same way you cannot parent the child of 12 years old. So it becomes very difficult for me sometimes because I am parenting 2 kids. One is 4 and one is 12. So I have to immediately shift my personalities. So with the 4 I'm very different, and with the 12 I have to be very different. So that we really need to change according to the child's age. So yes, sometimes fantasies also help the younger children to pacify their emotions, where you're not curbing them every time कि ऐसा नहीं हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं, that kinds. We need not give every time these reasons to them. And the last is that stop ignoring the feelings of the child. So many a times this happens with siblings, that दो बच्चे झगड़ रहे हैं और हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि बस ये ऐसे ही झगड़ा करते रहते हैं या ये नॉनसेंस होते ही रहता है. And you just tell the children that whatever you're doing is not good. So that time what we really need to take care is accept their need. For example, कोई एक टॉय के साथ झगड़ा हो रहा है 2 लोगों के बीच में, और मे बी 3 बच्चों के बीच में, एंड उस समय एवरीबडी वांट्स दैट टॉय. सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन टेल देम, आई अंडरस्टैंड, मुझे पता है आपको भी ज़रूरत है, उसको भी ज़रूरत है, एवरीबडी नीड्स दैट टॉय, बट यू गिव मी अ सोल्यूशन. वो क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए. So if they are elder ones, definitely they will understand and they'll find their own ways. You can tell them कि जब तक तुम ये sort out नहीं करोगे आप यहीं रुकोगे. Then second is one more thing where you can say is with the younger ones what I do is कि अगर इस टॉय के साथ झगड़ा हो रहा है बच्चा, तो हम ये टॉय हटा देते हैं, बिकॉज झगड़ा करना तो अच्छी बात नहीं है. एंड देन इमीडिएटली वन ऑफ देम, इवन द यंगर वंस 3 years 4 years, दे विल कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशंस कि बॉस अगर ये टॉय चला गया तो ना मेरा रहेगा ना इसका रहेगा. सो दे विल से कि हाँ ठीक है मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, या somebody will compromise. So that is how you can ask these children to actually change themselves and understand themselves. How to handle a toddler of 1.5-year-old. My daughter sometimes gets very cranky. 1.5-year-old, सबसे पहले 2 things you have to rule out, Swarnima, is that the child is not hungry, and second is the child is not sleepy. अगर ये दोनों चीज़ों को आपने केटर किया है तो जनरली बच्चे क्रैंकी नहीं रहते हैं. बट स्टिल इफ द चाइल्ड इज क्रैंकी देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट फिजिकल कंडीशंस मोर, बिकॉज एट योर एज, योर चाइल्ड्स एज, जल्दी से ये इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा अभी नहीं आते हैं. सो मोर ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स आते हैं.
So there you need to take care. And secondly, still if it doesn't work, sleep talks work a lot, so you can directly message me and I'll help you with that. So yes, Tina has a question and she's always been there, so I don't want to miss out on that. My 8-year-old son likes fantasy more. Is it good to have? It's amazing that your child is very creative. So you just need to probably streamline the child's energy in a positive way. So maybe he is language intelligent, so usko Tina aap usme kariye. I understand her problem, but she doesn't want to study. Give her smaller tasks, Mamta. आप जितने बड़े टास्क दोगे वो भाग जाएगी. सो कट देम शॉर्ट. जितना शॉर्ट करोगे उतना ईजी हो जाएगा बच्चों के लिए. सो एट द एंड that you all have listened to so many of explanations, tell me what is the basic essence that we need to develop in ourselves so that our child will listen. I want you all to type it here. For somebody, you might have understood, so probably for somebody it is, you know, dealing with oneself, or it could be dealing with somebody else, or any could. I would love if you type what is your take home message, which I can say here, because, or keep home message rather than take home message. What is your keep home message today? Yeah, so at the end I would just wind up by saying thank you for watching me. A small ciao from Dr. Nidhi Navandar. I'm a child psychologist and a parent coach since 2006. So it's been 14 years of experience. Yes, Tina, thank you so much. We should respect their feelings. Yes, thank you so much, Tina. Obviously हम उनके feelings को respect करेंगे तभी तो वो हम पे भरोसा करेंगे. What else can anybody write about it? Poonam, you nailed it. Patience. The most important thing that any parent needs is patience. And my daughters are teaching me lots of it. So again and again I'm telling you, being a child psychologist, it's not easy to be a parent, but definitely it's not impossible to be a better parent. So yes, thank you Namrata for showing that building partnership is very important. Yes, Varnima, patience is the key. Thank you so much. Quality time, patience, understanding child's emotions, amazing. Thank you so much. When are your next sessions? Please directly message me on Facebook. We'll add you on our WhatsApp groups, and in our WhatsApp group we are always updating about our next upcoming sessions and the paid session. So I would love if some of you would join for the anger management program that we are doing, so that it's for you. As parents, you need to erase your past so that you go ahead with your beautiful baggages and deal with your children and deal with yourself with that complete emptiness, all the negativity to be removed from your body. Those toxins need to be removed from your body so that you are giving the best to your child. So definitely do join us for the anger management program. You can directly message us, or you can follow us on Instagram. Of course I can, or OFCOURSE, I can. Of course I can on Instagram or on YouTube. So do hit the likes there and subscribe to my channel on YouTube. Thank you so much. Saying ciao finally. Dr. Nidhi Navandar, child psychologist and a parent coach with you. See you soon. Thank you.